Guys, welcome back to my channel. How are you all? And today's video we are going to rank my hair colors and rank my hair transformation over the time. Okay, and we have 5 tires over here. Again, I think no, it's actually, yeah, it's like 5 tires. Okay, so the first tire would be my favorite, like the one that I would always go back to. Then I have on number 4 is the one that I would say like, oh yeah, I like it. Would I want to go back to it? Maybe not. Maybe yes, I don't know. Number 3 would be meh, like I don't know, I have very mixed feelings about it. मुझे नहीं पता मुझे पसंद है या मुझे ये hate है. मुझे ये hate है. I don't know if I like it or I hate it, but yeah, like it's there. Number 2 and number 1 would be the least favorite ones. Like number 1 would be no, a big no, I would never do it again. Number 2 would be like 1 is बहुत कम, so let's just give it 2 kind of a thing, right? So yeah, let's start off. Okay, मैं थोड़ा side हो जाती हूँ because I have to put pictures for you to see. So I will give you the first picture. The first picture has to be my hair in its natural glory. So this is how my virgin hair was, right? I have dark brown hair, and let's just say the hair gene for me has been pretty good, right? My mom, she has this very thick, wavy, dark hair, right? And that is the sort of gene I got. Like my hair is voluminous, it's thick, it's dark, but of course abhi at this point I have like no volume at all because I've had a lot of hair fall over the years. As I've grown up, I have lost half of my hair. Okay, and specifically last time after corona बहुत ज़्यादा hair fall हुआ था, तो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, right? So yeah, I mean starting off with मेरे पास अच्छे बाल थे, right? So actually मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है timeline सारी की सारी because मुझे बहुत research करनी पड़ी थी कि मैंने कब क्या किया था. So in June 2017, that was the first time I got my hair colored. So these were blonde-ish, like light brown blonde sort of highlights. Again, I will put picture over here. And listen, let's be honest, मुझे अपने ये बाल बहुत पसंद थे. I was obsessed with this hair. This hair color was everything at that moment. और मुझे ये बाल बहुत अच्छे लगते थे. But would I want to go back to this hair? I don't think so. Like मैं ये दोबारा नहीं करवाऊंगी. So I would give it a number 4. I would put it on the 4th spot because I like them, but I don't like them enough to go back to them. So if you understand what I mean, right? Then in 2018, and I think this was around like the very starting of 2018, Feb, March-ish में, I got this blonde streak over here. It was very funny. Okay, ये 4 streaks मैंने यहाँ पे करवाई थी. पता नहीं किसके कहने से करवाई थी, पर क्यों करवाई थी मुझे नहीं पता. It was weird. It was such a funny face. Like that hair looked so bad. पर जब वो स्ट्रीक्स थोड़ा नीचे आ गई ना तो वो अच्छी हो गई थी. वो यहाँ पर अच्छी नहीं थी, बट नीचे आकर वो थोड़ी ठीक हो गई थी. So yeah, I think I would put this on number 3 because I have very neutral feelings about it. Like I don't hate them, but I don't love them either. So number 3 for these. Then in 2019, and I think ये बात है March 2019 की, जब मेरी ब्लू स्ट्रीक्स थी ना, ये नीचे आ गई थी, तो फिर मैंने हेयर कट करवा के अपने बालों को लाइक नीचे से इतना पोर्शन लाइक ब्लॉन्ड करवा के उस पर ब्लू कलर करवाया था. ना वो ब्लू वाज मोर लाइक ग्रीन ब्लू-ish कलर. अगेन पिक्चर आई विल पुट ओवर हेयर. एंड ऑनेस्टली ब्लू कलर, मुझे एक चीज़ पता लगी उस दिन कि ब्लू कलर इज सच अ बैड कलर टू गो फॉर. लाइक ब्लू कलर ना आप 4 बार बाल धोगे और ब्लू कलर खत्म हो जाएगा. विच फॉर पीपल लाइक मी जो बाल लिटरली हर एक दिन छोड़कर धोते हैं, इट इज़ like the worst decision ever because it just didn't stay. Like 2 हफ्ते के बाद मेरे बाल blonde हो गए थे. So for me, मुझे actually उस चीज़ का मज़ा ही नहीं आया because वो 2 हफ्ते में वो नीले बाल मुझे actually इतना flaunt करने का मौका ही नहीं मिला. और आई थिंक यू नो वो ब्लू एक्चुअली ऑलमोस्ट डार्क ब्लू लगता था. सो मेरी ऑफिस की लाइट्स में किसी को पता भी नहीं चलता था कि मेरे बालों में ब्लू कलर है. सो अनलेस मैं किसी के सामने सनलाइट में जाती, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे बालों में ब्लू कलर. इट वॉज सच अ मेस. आई रियली हेटेड हाउ उस सिचुएशन में वो चीज़ अच्छी नहीं थी, बट मुझे बाल बहुत पसंद थे. सो फॉर मी इट विल बी 4 स्टार. आई डिड लाइक इट. ओके, आई डिड लाइक इट. देन 2019 के दिसंबर में आई वेंट ऑल आउट एंड गॉट द रेड वाइन-ish कलर. दिस लेट मी टेल यू इज माई फेवरेट. लाइक दिस इज हैंड्स डाउन 5 स्टार. लाइक ये ना मुझे लगता है कि ये वो कलर था जो आई थिंक बहुत लोगों का फेवरेट है, जिन्होंने भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द टाइम देखी है ना, सब कहते हैं कि ये वाला कलर तुझे दोबारा कराना चाहिए. सो दिस इज लाइक माई फेवरेट 5 स्टार. आई वुड लाइक टू गो बैक टू इट. एंड या इट वॉज गुड. इट वॉज हॉट. आई रियली लाइक्ड इट. आई थिंक मैंने इसके साथ ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं की थी.
बट आई थिंक इस तरह के कलर की ना एक प्रॉब्लम ये रहती है कि बिकॉज फॉर समबडी लाइक मी हु इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ कलरफुल आई मेकअप्स, इस तरह के हेयर कलर के साथ ना मुझे मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई पर्सनली डोंट गो फॉर सच लाइट कलर्स बिकॉज फिर मेरे काम में मुश्किल आती है, राइट. So that is that. So then Corona happened, right? Lockdown लग गया. And around lockdown जो मेरा ये सारा रेड कलर था ये जा चुका था, right? It's like 4-5 months later. And मेरे बालों में like एक बहुत light brown, almost blonde streaks रह गई थी. They were not highlights. They were like, I would say balayage sort of. Yeah, it was pretty. It was really pretty. I really loved my hair. I was obsessed with that thing that was left in my hair, right? So I wouldn't say it was a hair transformation. It was something that was left from the previous hair color, but I was obsessed with it. So this also will go in my number 5 because I really liked it, right? And इसके बाद I remember इसी ईयर में नवंबर 2020 के अंदर आई डिसाइडेड कि मैं अपनी इसी स्ट्रीक्स को, ये जो भी ब्लॉन्ड लाइट ब्राउन है, इसको मैं ब्लू करूँगी. ठीक है. सो मैंने स्ट्रीक्स का हेयर कलर बाय किया. इट वॉज माई बर्थडे एंड आई रिमेंबर मेरे घर की वो कटोरी आज तक भी ब्लू कलर की है. इट वॉज दैट प्लास्टिक वाली कटोरी, so उसमें कलर अभी भी रिटेन कर गया था. एंड फर्श, राइट, मेरी फिंगर्स, मेरी नेल्स, everything was blue because that was the first time I was coloring myself and it was a hot mess. And I remember my color was not light enough कि वो उस पर ब्लू रिटेन कर पाता. सो जहाँ पर बहुत लाइट कलर था वहाँ पे हल्का सा ग्रीन टच रह गया था. आई विल पुट पिक्चर ओवर हेयर, ये दिखेगा भी नहीं, इतना कम था. सो बहुत हल्का सा टच था, ग्रीनिशनेस का, ब्लू नहीं था, ग्रीन ही था ऑलमोस्ट. सो या दैट वाज दैट. सो आई विल गिव दैट अ हॉट 3. आई विल जस्ट गिव देम अ 3 star because I have very neutral feelings about it. I didn't hate it, I didn't like it. It was just there. It was existing, right? Then उसके बाद I got a very major haircut and मेरे जितने भी ये streaks थे वो सब खत्म हो गए थे. And I was left with almost this sort of hair, like dark brown the way I have it. Like this is my normal hair. I have zero color. I have nothing at all. This is my normal natural hair. So this was the type of hair that was left, but that hair was pretty long. That was a long hair. उसके बाद 2021 में, and I believe October 2021 में, this was one of the big transformations when I got my hair cut in literally half the length, right? So मेरे बाल एक पॉइंट पे 2020 के अंदर ऐसे हो गए थे कि they were like down my waist. बहुत लंबे लंबे बाल थे. I will show the picture. They were long, like really long. But then I got them cut and this is how they were left. So this is how it was and I really liked this hair length. मुझे ये hair length बहुत पसंद थी, right? And then again 2021 के I think this was like 20th November ish. I got those very ugly blonde mess. I don't have words to explain it to you, but it was the worst hair color I've ever got and it would be easily 1 star. Like there's no doubt to it. I will show you the picture. It was so bad. It was so bad. मैं immediately जब पार्लर से वापस आई थी मुझे उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर करना पड़ा था टू हाइड इट. लाइक इमेजिन मुझे उसके 2-3 दिन के बाद एक शादी में जाना था विद दैट हेयर. इट वाज सो बैड. इट वाज सो एम्बैरेसिंग. सो उसको कवर अप करने के लिए मैं मम्मी का ब्लैक कलर लगा लेती थी. ठीक है. सो या अगेन पिक्चर. सो मैंने उसको कवर करने के लिए ब्लैक ब्राउन इस तरह के कलर कराए. When I was really fed up of it and this was exactly 1 year back in January 2022, I decided, you know what, I'm going to go the Deepika long bob style, right? बिल्कुल straight hair in the long bob. I will do it and I did myself at home and I took help from my sister. So हम दोनों ने मिलके मेरे बाल काट दी and I think they were like इतने बाल हो गए थे, right? And listen, I think मेरे वो जो लॉब कट था ना, I mean I'm only rating hair colors, but मैं अपने उस लॉब कट को भी 4 स्टार देना चाहूँगी. ओके, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, बिकॉज ये बिल्कुल लास्ट चीज़ है. नाउ मेरा वो जो लॉब कट था ना, people have very polarizing opinions about them. Some people absolutely love that hair. They were like, wow, this looks so good. And then there were people who were like, I really liked your hair long. Why did you cut your hair so much? And yeah, that was the type of
opinion people had about that hair. I personally did like my short hair. Like listen, मुझे ना ऐसा लगता है कि for somebody like me, as I said, मैं अपने बाल हर एक दिन छोड़ के धोती हूँ, धोने पड़ते हैं because मेरे बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं. एंड विंटर में ना इस तरह का बालों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है. राइट नाउ जब मुझे अपने बाल हर दूसरे दिन धोने पड़ते हैं और मुझे उतनी मौत नहीं आती ना, तो मुझे लगता है कि इट वॉज अ गुड डिसीजन टू गेट योर हेयर कट. और मेरे छोटे बाल मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं उस टाइम पे. सो ऑनेस्टली इन दैट सेंस मुझे मेरे ये छोटे बाल अच्छे लगते हैं. राइट, समटाइम्स आई डू मिस माई लॉन्ग हेयर, बट यू नो आई थिंक मैंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ लंबे ही बाल रखे हैं. सो आई एम एन्जॉइंग माई शॉर्ट हेयर फेज. Right, so yeah, that is that. Yeah, okay, so yes guys, just let me know which one were your favorite hair transformation, haircut. How did you like my hair the best? Right, and hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already. I'll meet you in the next video guys. Bye bye.